हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग वापस से खेल रहे हैं गेंशिन इम्पैक्ट। तो यार पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, हम लोग जोंगली की मदद कर रहे थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फेयरवेल ऑफ रेक्स लैपिस। सो क्या हुआ था कि हम उसकी मदद कर रहे थे एंड जोंगली जो है उसने हमें ट्रीट दिया था एंड हम उस रेस्टोरेंट पे जाके खा रहे थे। तो अचानक से वहाँ पर गानियो आ जाती है एंड उसने हमें बताया कि जो निंगवॉन है उसने हमें इनवाइट किया है अपने जेड पैलेस पर। तो अभी जो प्रिपरेशन है फेयरवेल का वो तो कंप्लीट नहीं हुआ, बट क्योंकि भाई इनविटेशन आया और ऑफिशियली निंगवांग ने हमें बुलाया, तो चलो फटाफट से चल के देखते हैं कि क्या मैटर है जिसके वजह से निंगवांग ने हमें खुद उसके जेड चेम्बर में बुलाया है, वो जो आप आसमान में देख रहे थे अभी। तो चलो उस पर चलते हैं। मुझे तो यार कुछ गड़बड़ लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है चलो देखते हैं। ओके, वो रहा जेड चेम्बर। चलो भाई साहब कुछ ज़्यादा ऊंचा है यार, इतना ज़्यादा चढ़ाई करना पड़ रहा मुझे। ओके ओके फाइनली यस, बहुत ऊंचा है भाई वो। पता नहीं क्या करना पड़ेगा। यू आर ओनली रियलाइजिंग दैट नाउ। Since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. ओके ठीक है, तो अभी हमें कोई तरीका ढूंढना है जिसके मदद से हम उतने ऊंचाई पर जा सके, क्योंकि उड़ के जाने का तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आसपास कोई भी टॉल माउंटेन तो मुझे नहीं दिख रहा है। सो आसपास कुछ तो होना चाहिए जिसके मदद से हम लोग जा पाए। बाय द वे एक ऊपर एक ग्रीन वाला पहाड़, ओके ये रहा, कुछ तो है यहाँ पर। अच्छा, इसको एक्टिवेट वगैरह करना पड़ता है क्या? मैकेनिज्म थिंग। अरे भाई ये मैकेनिज्म थिंग है, मैं इतने टाइम से इसको देख रहा हूँ, इग्नोर करता हूँ यार। मैंने आज तक इसको कभी एक्टिवेट करने का ट्राई नहीं किया। अभी वो हर जगह जाके देखना पड़ेगा मुझे और इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत बार इसको देखा है। मुझे लगा था बस ये हवा जब चलती होगी तब ये घूमता होगा। उसके एक्टिवेट करने के लिए हमें लगेगी शायू, क्योंकि मैंने ट्रैवलर को जो है वो हमने करके रखा है जियो। एंड रात हो गई क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इधर उधर ग्राइंड करने चला गया था एंड हम वापस आ चुके हैं यहाँ पर। एंड लेट्स गो, अब आगे जाके देखते हैं। ओह बाय द वे आगे एक चेस्ट है। मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे वापस जाना पड़ेगा। नेवर माइंड। ओके लेट्स एक्टिवेट दिस। वो रहा हमारा चेस्ट। ये हम पहुँच गए यहाँ तक। कुछ ज़्यादा आगे भाई। ये तो वेट व्हाट? हाँ ये सही रहेगा, हम वापस। बट क्यों? अच्छा ओके, तो मतलब जो है वे वहाँ का सीक्रेट नहीं है, वो नॉर्मल वे ही है जो कि हमें ल्यूए में जाके वापस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से नहीं जा सकते जेड चेम्बर के अंदर। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली भी देखूँ तो मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि कहीं पर भी कोई बड़ा पहाड़ या कुछ भी नहीं है। सो हमें वहाँ से जाना होगा। बाय द वे ग्यूजोंग बैलिस्टा, तो ये क्या दिमाग खराब है क्या? अरे भाई ये कह रही कि ग्यूजोंग बैलिस्टा से हमें अपने आप को थ्रो कर लेना चाहिए। वाह भाई पाइमॉन, शाबाश। ठीक है, तो मतलब इससे हम चेक करेंगे कि आसपास है कि नहीं कोई वे। पहले मैं ये चेस्ट ओपन कर लेता हूँ बाय द वे। चलो सायु कुछ तो काम आ रही भाई एक्सप्लोरिंग के लिए। बाय द वे ठीक है, ये चलेगी। मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेवल अप कर दूँ, बट नहीं यार इतना जल्दी नहीं करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्यूजोंग बैलिस्टा की ओर चलते हैं एंड देखते हैं वहाँ पर क्या है। ओके सो फाइनली वी आर हियर। ये आ गया हमारा ग्यूजोंग बैलिस्टा जिसको हमने रिपेयर किया था एंड ये अभी भी सही है। ओके नीचे मेलिलिथ खड़े हैं। ओके Who trespasses on these hallowed grounds? अरे भाई हम लोग तो बस पूछने आए हैं। What are you talking about? वही तो। We're invited guests. What makes you think you can treat We are us guest like of this? Ningguang, तुमको पता नहीं है शायद। Wait, maybe this was Ningguang's plan all along. She अरे भाई मेरे को भी गड़बड़ लग रहा था बाय द वे, बट मेरे को लगता नहीं यार ऐसा कुछ होगा। That's not the case, yes. Now Paimon's mad. You over there. This is a trick, isn't it? How shameless. यार ये पाइमॉन रुक जा भाई। We're just on guard duty. What do you mean shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once. अरे भाई तुम लोग शांत हो जाओ, हम लोग कुछ यहाँ पर ये नहीं कर रहे, ठीक है? Line 'em
ठीक है, अब ये लोगों को लगता है ये लोगों को मार खानी है। चलो भाई, बहुत टाइम हो गया, ये लोग सबको लपेटते हैं। लो आग खाओ, खत्म भाई। देखो कितना इजी था। 1 बज गया, अच्छा 2 बज गया, नो माइंड, इनको लपेट लेते हैं, क्या दिक्कत है। यानफे का डैमेज तगड़ा है भाई, कुछ भी बोलो। ओ भाई और 2 भी आना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 100 भेजो, कोई इशू नहीं है, सब मरोगे। अरे 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 भाई ये क्या है? अपने स्पीयर को अपने पास रखो भाई तुम लोग। 1 मिनट, अब बोलो। अरे वाह, शील्ड आ गया मेरे पास जियो रिएक्ट होके। ये सही रहता है भाई, कभी कभी शील्ड आ जाता है ना, फायदा हो जाता है। 1 सेकंड, हमार मार। उनको पता था कुछ नहीं होगा शील्ड से, बस हम टेस्ट करना चाह रहे थे शील्ड से कुछ होता है कि नहीं। सही है भाई, मारो। ओके, ये अच्छा, ये थोड़ा सा लगता है स्ट्रांग है ये, मतलब उनका मुखिया टाइप होगा। अच्छा वो नीचे गिर गया, बाद में उसे देखता हूँ। ओ भाई तगड़ा। अरे भाई जियो वाला भी तगड़ा है भाई देवे, बट उतना कुछ खास नहीं लगता है क्योंकि एलिमेंटल रिएक्शंस जियो का उतना नहीं है ना यार, मज़ा नहीं आता है। अरे यार 1 मिनट भाई, लाइफ कम हो गया थोड़ा सा। हाँ अब लो ये खाओ तुम पर। फिर हम उसको नीचे गिरा दिया। हर बार ये जगह बड़ा फालतू है यार। आई थिंक गया वो। अच्छा खत्म हो गया, चलो सही है। 4 जना है, सॉरी बेटा। लाओ बर्फ खाओ तुम लोग, जम जाओ। अरे यार पीछे से मार देता है ना, यही अच्छा नहीं लगता। बारबरा और यानफे का क्या है ना, वो लोग क्लोज में ना फाइट नहीं ले पाते, वरना बहुत तगड़ा है क्योंकि जो सामने वाला एनिमी है ना उनको मार सकता है, तो दिक्कत होता है। लो सब गया, बस 1 बचा है। ओके, ओ वो भी गया क्या? Stop! What's all this about? ओ ओके। Coaching. These two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhou. अरे यार हम लोग भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, Strange. वही तो हम लोग को स्ट्रेंज बोल रहा है। You want to go to the Jade ओ Chamber? भाई ये तो कचिंग है, 5 स्टार कैरेक्टर। Way to guess. Here to look for the Liu Qixing. Who are you? ओके Well, as it happens, I am अच्छा ये one of the लियो Liu चीसिंग, अच्छा ये Qixing. भी है उसी के टीम पे। ओके गानियो भी लियो I'm चीसिंग है और ये भी। The Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? हाँ वो Didn't हम लोग expect थोड़ा to रास्ता meet you भटक here गए in the अपना। mountains. Wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhou Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair. And yet, सिंगल it नाइट, was अरे हाँ हम fixed ही in लोग a तो फिक्स single करके गए night. हैं। I came here to अच्छा investigate इन्वेस्टिगेट that करना है। occurrence. आई डोंट थिंक ये These बताना इसको monoliths are सही just रहेगा। here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. थिंकिंग इजंट दैट हार्ड Anyway, पाइमोन। for a mortal to be able to repair an adepti मोर्टल एबल टू रिपेयर। हाँ तो quite the जोंगली ने mystery, रिपेयर किया ना भाई इसको। even to the Qixing. हाँ पाइमोन मत बताओ, मत बताओ। Oh, right. So, Lady Yuheng, Yes. might you have any idea why Lady Tianchen invited us to go to the Jade हाँ वो हम Chamber? लोग को क्यों बुलाई है Just call me भाई? Kuching. कॉल मी I'd कचिंग। say यप that इसका नाम है Ningguang's कचिंग, जैसा purpose कि is मैंने to बोला। request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance, or at least to not wholly अच्छा, side okay. with the adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. ओके When you ठीक है। say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? एरोगेंस। You are mortals and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. ओके Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like कचिंग it is. कतई गुस्सा लग रही है They're यार मुझे। underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue. वही तो, ये who रेस्पेक्ट नहीं doesn't कर रही भाई, ये respect the कैसे gods बात कर रही है only बाय द वे। बट ठीक है, Should I सबके अपने अपने respect थॉट्स the होते हैं। shallow sense of time and condescension to तो mortals इसका कहना है कि वो that has बचा caused them सकते to थे, delay बट in moving वो लोग against थे ही us, नहीं, Qixing? एंड अब वो लोग निंगवांग Forget it. के ऊपर उंगली I उठाएंगे shouldn't एंड speak ऑल, of ऐसे them कुछ this तो चल way. रहा है यहाँ पर। This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance.
But to think how surprisingly civilized of them. Any chance talk it Well, about for with Ningguang, Ningguang she would talk she anything talk and anything everything and out if okay she ठीक है could. तो Ningguang हमें कुछ इसी The मैटर time पे of the बात करने के लिए Adepta बुला रही है has क्योंकि long हम लोगों ने passed. एडेप्टाई If से even बात the किया Liu यहाँ पर Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liu? Another super bold statement. okay I'll stop here. Honestly, I hadn't intended good to say listener so much. traveler yes I am a good But you're listener a good listener, Traveler. मैं ऐसे भी नॉर्मल लाइफ You में भी should कम ही both be बोलता off हूँ to यार the मैं Jade ज्यादा Chamber. सुनता हूँ लोगों की Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The Okay, cream ठीक है of अरे पहले Liu's रास्ता तो मिल जाए mercantile तब तो club लेट होने also का कोई बात ascending हो to the Jade Chamber is the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा ना But wait, that's right. Greeting gifts are a staple of Leah's culture. We need Okay. to get one. Not to curry favor or anything, just to so eager respect Leah's culture. All right. You can decide on your greeting gift ओके ठीक है yourselves. तो हम निंगवांग से Let me मिलने के लिए tell जा you रहे हैं how to सो get to the Jade Chamber हमें first. एक गिफ्ट You प्रिपेयर didn't करना होगा actually have to come to निंगवांग को my देने tent के here. लिए क्योंकि ऐसा Go यहाँ back पर to Liyue है Harbor. कि जिससे मिलने जा रहे Find a हाई guide सो at the Liyue गिफ्ट High लेके जाते हैं यार Pavilion. जैसे हम लोग And- नॉर्मली भी Well सो then. वी नीड टू टेक अ गिफ्ट फॉर May हर we meet again, traveler. एंड होपफुली कचिंग ने हमें Well, बात बता दिया है you कि हमें may कैसे not जाना respect है the वहाँ तक gods, but Paimon thinks she's a सी मेड pretty अ गुड cool इम्प्रेशन ऑन person. मी टू ओके So, what should we give to Ningguang when we see her? हैवंट यू Oh, पाइमॉन right. Paimon dreamed of an amazing snack सुगर last night. फ्रॉस्टेड स्लाइम Sugar यार भाई frosted कैसा slime. अजीब अजीब खाना बता रही है Paimon ये has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. ओके Why don't we go with that for a gift? Nope. रेसिपी है तेरे पास Paimon's sure that we just need to make it with some बूम शका boom अरे भाई shakalaka. ऐसे तो नहीं बन जाता खाना Let's की go बूम gather शकाला का ingredients. Time waits for no one, and neither will ओके our ठीक है riches. अभी हमें निंगवांग को कुछ तो रेसिपी देना है जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करना है ओके सो मैप पे हमारे 2 लोकेशंस आ चुके हैं तो चलो फटाफट से चल के देखते हैं ओके तो पहला लोकेशन ये वाला दिख रहा है तो चलो चलते हैं फटाक से अच्छा स्लाइम के लिए आए हैं यहाँ पर ये स्लाइम बेटा गया It looks crystal clear. भाई डिलीशियस किस एंगल से लग रहा है तेरे को पाइमॉन That's the one. ये तो गया ओके पहला इंग्रेडिएंट हमें मिल चुका है जो कि है स्लाइम ओके इनको भी मैं फिनिश कर लूँ थोड़ा बहुत परेशान कर रहे भाई हाँ ठीक है तो पहला इंग्रेडिएंट हमें मिल चुका है स्लाइम एंड जो है दूसरा इंग्रेडिएंट वो सामने पे है चलो और तैर के चले हम फटाफट से ओ ये के फ्रॉक था मैं उठा नहीं पाया मैंने क्लिक किया बट नेवर माइंड Is it just Paimon, or is there a sweet ओके fragrance कुछ in the फ्रेग्रेंस है यार पे air? Did you hear that? It seemed like it came from those ruins. ओ भाई over ये there. ट्रेजर होल्डर्स ने यहाँ पर एक बंदा पकड़ के रखा है यार ये लोग नहीं Would have सुधरेंगे locked someone inside. चलो इनकी धुलाई करें हाँ भाई तुम लोग यार कभी सुधरते हो ओके ज़्यादा ही डैमेज दिया भाई तेरे मेरे को एक भाई मर जा मार ना ओके ठीक है सही है भाई जियो ट्रैवलर भी काम आता है कभी कभी मतलब तगड़े हैं उतने भी नहीं बट ठीक है तगड़े अटैक से भाई ये सही लगता है मेरे को बंदों को मैं नीचे फेंक देता हूँ बट इसमें एक इशू क्या होता है ना कि एक मिनट यार ये मोटा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है अरे यार उसको लगा ही नहीं हाँ मैं बोल रहा था कि उसमें इशू क्या होता है कि वो वापस आना ही पड़ता है उनको अगर वो मरेंगे नहीं तो अगर मर जाएंगे तो ठीक है वरना तो वो ऊपर वापस आ जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत होता है जाना भाई तू मरा नहीं था अभी तक मेरे को लगा वो मोटा मर गया होगा ढीठ है भाई छिहत्तर बच्चा था वो ठीक है ये गया और ये एक फाइनल ब्लास्ट खत्म कितना इजी था देखो फालतू में पंगे लेते हो भाई तुम लोग आके ओके ये फ्लावर्स कलेक्ट करने थे ओके हमारा सब इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो चुका है एंड इस बंदे को अलग एक मिनट चाबी लगेगी चाबी कहाँ मिलेगा भाई मेरे को लगा उस बंदे को बचा लेंगे हम लोग चाबी ओके ये एक बंदा ये बदतमीज इंसान अभी भी जिंदा है तो नीचे क्या कर रहा भाई ऊपर आके एक ही बार में पिट लेता चाबी मिल गया ठीक है चाबी मिल गया अब इस बंदे को हम आज़ाद करते हैं ओपन आजा भाई बाहर आजा Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders.
When their mood was नहीं good, भाई इतना तो they'd नहीं है rearrange कि those वो pots of तुम sweet सड़ जाता। flowers. हाँ भले तेरा मुंह जरूर बिगाड़ देता वो लोग, ये बात तो सही है। He'd नेवर rearrange माइंड, my face. थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। I was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. अरे भाई पाइमोन कुछ भी मतलब भाई, पाइमोन हमेशा ऐसी करती है। Don't say मतलब that. पाइमोन का कहना है कि I इसे only कुछ escaped चाहिए, this थैंक्स बोलने की predicament जरूरत because नहीं of है। you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I often walk around ओके these ठीक है, mountains in तो search इसकी of कोई शॉप है antiques. जहाँ पर ये I हमें never बुला रहा है। expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. अच्छा ठीक है, Is there समझ anything गया। that तो you ये want? कुछ एंटिक्स ढूंढ रहा था Antiques, जिसके लिए treasure, ट्रेजर goodness, होल्डर्स ने इसे you पकड़ name के यहाँ पर फेंक दिया। Well, as long as you want what I have to offer, of course. योर गुडविल इज एनफ फॉर मी। Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? अच्छा हाँ बता भाई उसे कि हमें गिफ्ट देने के लिए कुछ चाहिए। ओके We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques? सही है भाई, पाइमोन ने काम निकलवा लिया भाई अपना। Mingxing Jewelry. शाबाश We लड़की, have the best यू आर gift वेरी wrapping गुड। service in तो the 7 nations. ठीक है, अब हमें खाना भी मिल चुका है एंड पैक करने के लिए हमें गिफ्ट भी मिल चुका है, मतलब गिफ्ट बॉक्स भी मिल चुका है जो कि ये देगा हमें। Paimon sugar frosted slime now comes in a beautiful package. यप, ब्यूटीफुल पैकेजिंग के साथ हमें उससे देंगे निंगवांग को, क्योंकि भाई अब इतना अच्छा से इनवाइट किया गया है तो अच्छे से देंगे ना, ऐसे वैसे थोड़ी ना दे देंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमें उसी के शॉप पे जाना है एंड देखते हैं क्या होता है। चलो फटाक से चलते हैं। ओके तो हम लोग लियो आ चुके हैं एंड वो रही सामने उसकी शॉप जो कि ज्वेलरी का। ये शॉप मैंने देखा था बाय द वे पहले भी। ओके वी आर हियर। There. A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Yep. Meng already told me about it. Thank you both for saving him. ओ भाई वो आके Many बता भी of the दिया। best goods in our store were found by Uncle Meng. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue अच्छा, doing ठीक business. है। Here, this container is itself an antique, with at least ओ भाई। 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great. Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves. As long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar frosted slime! ओके तो हमारा ये जो है बन चुका है भाई। कब बनाया, बनाते हुए तो दिखाता। ठीक है, तो हम लोगों ने उसी से पॉट में बनाया है, इन्हीं से पॉट लेके एंड इट्स रेडी। सो हमने इस डेकोरेशन पे उसे पैक कर दिया। ठीक है, Ooh, it looks beautiful! ओके Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. यप, चलो जल्दी से चलते हैं जेड चेम्बर। और वैसे हाँ अच्छा, रास्ता तो हमें पता चल ही गया है ना। अब हमें वहाँ पर जाना है एंड लुक फॉर द गाइड टू द जेड चेम्बर। ओके ठीक है, मेरे को अभी तक यहाँ आने का रास्ता नहीं मिला यार। मैं हर बार यहाँ से ऐसे ही चढ़ के आता हूँ, हर बार मुझे ऐसे ही आना पड़ता है। आई थिंक रास्ता उस साइड से है, मतलब पूरा राइट से है। बाय द वे गाइड यहाँ कहीं तो दिख नहीं रहा है मेरे को, एंड जो रास्ता उधर से आने का वो राइट साइड से है। ओ ये रहा गाइड। ओके ओके आई गॉट हिम। ओ ये तो रहा, ये उड़ा के लेके जाएगा उसे शायद से। ग्रीन पत्थर। According to Kuching, excuse me, do you sell the moon here? सेल द मून हियर? Yes. यस, How many हाउ would you वुड like? यू लाइक? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the To chamber. ascend to the chamber. Speaking of which, are you to the Nadine Speaking one? of Okay, which, ठीक है। Are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with? सबने बता के रखा भाई, सबको निंगवान बता के रखी है। And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? ओके कुछ कोड रहता है जिस जो ये बोल रहा है कि वो सेम नहीं था जो कि गेस्ट यूज करते हैं, बट ठीक है। आई डोंट नो अबाउट दिस भाई। हमें बुलाया गया, हम आ गए। ओ ये आ गए निंगवांग। ओ भाई वेलकम मिस निंगवांग। I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. जूनियन कस्ट। ओके It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope यस, you like होपफुली it. आपको पसंद आए। For me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. ओके Oh no, it's nothing. I'm glad you like it too.
This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the ओ size भाई of तो a पहले ये garden. एक रूम के साइज का था एंड अभी ये इतना Now बड़ा हो it is चुका है एंड ये large जब enough to let स्टार्टिंग out से the तो भाई moon and काफी the मेहनत skies लगा of के ये Liyue. बना रही है जेड One चेम्बर को day, एंड फाइनली I अब इतना believe it अच्छा will दिखता है भाई overshadow वो all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of ओके the हम Knights बहुत of स्पेशल है कि Erroneous, हमें यहाँ पर who spoke highly इनविटेशन of दिया you. गया है थैंक्स As निंगमोंग such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. भाई ये नजर रखी हुई And थी I हम लोग के finally ऊपर got शुरू one से of लेके your अभी moments तक when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. भाई वांगशुंग में सब के सब इसके आदमी है भाई और ये तब से लेके अभी तक हम लोगों का नजर रखी हुई थी Yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. ओके सो यहाँ पर अभी हमें करना है कि निंगवांग से बात करना एंड इसने हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के लिए बुलाया अपने पास बाय द वे यार यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार बहुत मस्त है I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built ओके cities तो and nations 7 on गॉड्स the यहाँ पर ribbon से thing. स्टार्ट होते हैं जो कि And thus वॉर के बाद began हमें the देखने era को of मिले the थे Seven. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. ओके सो Those are वो जो giant spears of rock फॉरेस्ट है hurled वो by एक्चुअली Rex Lapis during रेक्स the लैपिस war. के द्वारा क्रिएट Beneath किया the गया है वो spears जितने lie भी those दिख रहा है ना passed down by वो Rex Lapis सारे in के those सारे days. रॉक्स रेक्स लैपिस Gods के that द्वारा failed to क्रिएट किए seize गए the हैं title of Archon. ओके Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the Seven changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue. But the Order of the Seven will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that ओके time comes, यस रेक्स the लैपिस को तो relationship भूल नहीं between सकते the यार people क्योंकि of यार Liyue वो आपका मेन and the गॉड है gods सो and यप Adepti will surely no be problem. different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? सो एक्सुवा के क्यों छिपाए हो That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. यस हम लोग थे Even एंड I वो was सब caught एकदम completely सडन off था यार guard. एकदम अचानक से हुआ किसी को You कुछ were पता ही नहीं there, चला कि आखिर वो you हुआ know कैसे saw. जो भी वहां But our पर enemy हुआ has long रेक्स lain लैपिस hidden का within the डेथ heart. होना मतलब समझ में ही If नहीं we आया do किसी not को act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? पता नहीं What do you think, अरे मेरे से traveler? पूछ रही है इट इज हिम अच्छा चाइल्ड की बात तो नहीं हो रही यहाँ पर What are you two talking about? मेरे को कंफर्म नहीं है बट शायद से चाइल्ड की बात हो रही है The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. ओके Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. ओके ठीक है अभी हमें उसके पीछे जाना है उसके जेड चेम्बर के अंदर फाइनली वी आर गोइंग इनसाइड द जेड चेम्बर बॉयज भाई साहब Huge hall. क्या मस्त प्लेस है यार Never seen such a fancy कितने place अच्छे तरह से डेकोरेशन किया गया है यार इसके अंदर भाई कुछ भी बोलो बहुत मस्त है यार इतना बड़ा सा ये लगा के रखा है एंड इधर बुक्स एंड ऑल है नीचे भी है यार फ्लोर तो
यहाँ पर नीचे भी फ्लोर है। ओके नाइस नाइस। ओके निंगवांग वहाँ पर खड़ी है एंड हमें यहाँ से जाना। भाई यहाँ पर ओ भाई पानी भी लगा रखा है इन्होंने, मतलब पानी इकट्ठा कर रखा है, मतलब शो कर रखा है। हाँ फाउंटेन जैसा। ओके सो ये रही निंगवांग। ओ भाई यहाँ पर कलेक्टेबल्स है। अरे यार कहीं भी छोड़ना नहीं है भाई, कुछ जहाँ भी फ्री का चीज़ देखे उठा लो फटाफट से। उससे बात करने से पहले मैं सबसे पहले ये सब उठाऊंगा। अरे पढ़ना नहीं था यार ये सब। हाँ मेरे को ये सब उठाना है। हाँ ये बुक सब उठा लो भाई फटाफट से। अब बात कर लेते हैं। सब चोरी हो चुकी है, मतलब चोरी नहीं बोलेंगे। Make yourselves at home if you wish. ओके इसे हम अपने घर जैसे समझे, ठीक है। I have invited you two here as friends. हाँ हमने पहले ही आपके बोलने से And when पहले ही friends घर come जैसे over समझ to के सब play, उठा चुका है our हम लोग। enjoyment comes first. Naturally. Ooh, isn't this that legendary wall? कौन सा? ओ अच्छा Why, ओके सो you यही captured ये me वही to वाला the वॉल है wall, जहाँ I से see. ये पेपर फाड़ के फेंकती है नीचे एंड जितने भी मर्चेंट्स होते हैं सब इसके पीछे रहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशंस रहते हैं। Super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted Yep. to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching, ओके तुम्हारे और कचिंग के बीच में मैं शायद से कचिंग को चुनूंगा क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता चला तुम करना क्या चाहती हो। you'd pick Kuching? यप Nah, I had a feeling. भाई वो भले And I गॉड के wish बारे I में बुरा thought her बोलती है a bit बट कम से कम too वो जो भी hard-headed. है वो क्लियर रख With रही है अपने someone of her सामने। character on the Chising, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Chising Okay. don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors शायद of से our फटुई का काम usurpation है। of power. Indeed. फटुई It भाई seems ये that लोग नहीं you सुधरेंगे understood what यार I meant कभी to भी। say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation. And also ओके to ठीक prevent नहीं है something इसने similar कुछ to the बुरा incident होने at से बचाने के लिए Mondstadt. उस With एक्सुआ Rex को छुपा Lapis's दिया death, the ताकि कुछ Fatui have जैसा busied मॉन्स्टार्ट में themselves हुआ था with वैसा फिर से clandestine ना हो। actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? क्या बोलना Of भाई course. पाइमन तेरे को? Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in हाँ return. भाई ये नहीं सुधरेगी। So, does that सीरियसली approve? पाइमन सीरियसली। It's all right. आई लाइक डायरेक्ट पीपल। भाई ये people. क्या बंदी है यार, Well, कुछ we भी have पूछते made रहती quite a है। bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please. ओके वैसे मैंने पहले ही उठा लिया जो भी चाहिए था मुझे। Paimon was just waiting for you to say that. Let's मुझे जितने भी बुक्स मिले मैंने उठा चुका ऑलरेडी। get. One of the sheets on that wall. Don't ये look ये at क्या Paimon भाई like तुमको that. क्या करना है भाई One of पाइमन those उस sheets पेपर of से? paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. भाई बात तो वैसे सही है इसकी बट कोई खरीदेगा? The biggest one. ओके सो हमें यहाँ से पेपर लेना है। ये बड़ा वाला पेपर, इस पे कुछ तो मार्क है बाय द वे। Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see इस पे what's कुछ तो written लिखा on हुआ है। it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us. ओके उस पे एक मार्क बना हुआ है तो शायद से पता नहीं वहाँ कुछ तो हो सकता है। Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. फटुई से रिलेटेड आई Doesn't sound थिंक। like treasure at all. यप ये ट्रेजर नहीं है। This piece of paper shows that a Qixing spy discovered traces of classified Fatui research Okay. in the sigil of permission.
Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of Permission? Paimon wonders सिजिल ऑफ परमिशन तो हम लोग को भी मिला था ना, जिससे हम लोग अडेप्टी से बात किए थे। कुछ गड़बड़ है भाई। You and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. It's unfolding a little. Oh, you really think Yep. so? Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Yes, हम लोग उसके ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते भाई। क्या चल रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है उसका। That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to ठीक है, जोंगली के पास जाने से पहले सबसे पहले अभी हमें इस मार्ग पे जाना है एंड चेक करना है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, जो भी फट्टुई प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, आई लाइक दिस प्लान पाइमॉन। फटाफट चलते हैं, उनकी पिटाई करके आते हैं हम लोग कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। ओके, तो मैं जेड चेम्बर से बाहर हो गया हूँ। मैं थोड़ा इधर उधर खोज रहा था, मुझे लगा यहाँ पे चेस्ट हो सकते हैं, बट नेवर माइंड, मुझे एक भी चेस्ट नहीं मिला। ओके, तो अभी सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं उस लोकेशन पर एंड देखते हैं वहाँ पर फुट्टुई क्या कर रहे हैं। बाय द वे लोकेशन कुछ ज़्यादा दूर है यार, यहाँ से उड़ते उड़ते नहीं पहुँच पाऊँगा। ओ भाई, अच्छा वहाँ मैप खोल के देख लिया, हमको लग रहा था उड़ते उड़ते चले जाएंगे, बट नेवर माइंड। ठीक है, वहाँ चलते हैं। ओके, सो ये रहे फुट्टुई। भाई ये मोटा से मेरे को बहुत नफरत है भाई, ये मोटा बहुत दिमाग खराब करता है यार। वो हथौड़े वाले से उतना डर नहीं लगता जितना मोटे से लगता है भाई। भग, ये बार बार ना जमा देता है वो आइस वाला मार के। इसको हमको जल्दी से ख़त्म करना होगा, सबसे पहले इसी को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये ओ भाई कुछ ज़्यादा जल्दी मरा। नेवर माइंड, मेरे को एक शील्ड भी मिल गया बाय द वे आइस वाली। अरे उसको कुछ हुआ ही नहीं। ओके भाई मर जा। बारबरा से ये, उसके बाद अरे यार प्राइस करना था उसको। मेल्ट हुआ होगा बाय द वे, वो जमा हुआ था ना। वो एक नीचे लग गया भाई, मेरा जियो का वो नीचे चला गया। हट, इसका शील्ड आया हुआ यार, हमको इसको मारना होगा। ओके, वाटर से मरेगा क्या मेरे को पता नहीं। ओके, उसका शील्ड जाने। ओके, शील्ड गया उसका। ओपी, एंड ये भी गया। ओपी, नॉइस नॉइस। ये भी, इसको भी मार लेता हूँ मैं एक बार। भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उस मोटे को मारने के बाद, मतलब उनको मारने के बाद कुछ पजल्स भी थे यहाँ पर, उनको सॉल्व करके मैं आ चुका हूँ। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। इट्स लुक्स लाइक, अरे वो लोग शायद से उसको पैटर्न को कॉपी कर रहे हैं। But where? Oh, Paimon knows. It looks just like the sigil of permission the child gave. तो चाइल्ड ने जो सिजिल ऑफ परमिशन दिया तो इसी से बना हुआ था। Relic of the Adepti end up in the hands of someone like child. It's not just a relic. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the sigil of permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine. तो भाई यहाँ पर चाइल्ड कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। मेरे को चाइल्ड पे पहले से शक था बाय द वे, एंड वो शक जो है यकीन में भी बदल गया था जब हम लोग वहाँ पर फार्मेसी पे थे। Seems Fatu is definitely something up to it, और बड़ा प्लान कर रहे हैं भाई वो लोग कुछ तो। ओके, सो अभी हमें वापस से जोंगली के पास जाना है एंड रिट ऑफ पार्टिंग का जो प्रिपरेशन है उसको हमें वापस से करना होगा। तो चलो वापस से चलते हैं जोंगली के पास एंड देखते हैं अभी क्या करना है हमें। सो निंगवोंग के अच्छे से मीटिंग के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर दियो मास, और चलते हैं हम लोग फटाफट से जोंगली से मिलते हैं। बाय द वे वो रोबोट उड़ गया पीछे, बट मेरे को उससे लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, वो क्या है, उड़ गया ना। यप, वो उठ गया, मिसाइल ना मारे बस भाई वो। ओ ये रहा जोंगली भाई साहब यहाँ पर खड़े हमारे। और भाई जोंगली कैसे हो? हम निंगवोंग से मिलके आ गए, मजा आ गया उससे मिलके भाई। जेड चेम्बर बहुत सुंदर था, राइट ऑन टाइम। ओके, नाइस नाइस। यस, मजा आया, बट चलो थोड़ा बहुत पता नहीं, कुछ तो फटोई बड़ा प्लानिंग कर रहा भाई।
fancy schmancy place. हाँ before. प्लेस तो बड़ा मस्त था यार. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? कुछ बातें तो हुई है. Super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh. So you also met with यप हम लोग Kachin. कचिन से भी मिले हैं. What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. भाई पाइमन एक एक बात पूरा लाइन टू लाइन बोलती है भाई. कितना याद रहता है इसे. Then what future is there for Liyue? No respect for the divine. No respect for Indeed, divine, yes. Contrary to the ever-bold Kuching, Ningguang is more of a businesswoman at heart. Though they are both members of the Qixing, although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes. हाँ निंगवांग she has इंटेलिजेंट only तो है relied by on the way. herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade हाँ Chamber. जेड चेम्बर को इतना बड़ा It's the बनाया second भाई most उसने. important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. हाँ वही बात है. मोरा से वो और एक जेड चेम्बर खड़ा कर सकती है. The Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. रिप्रोड्यूस हाँ वो लोग सिजिल बनाने का No matter कोशिश what कर they रहे हैं may be भाई. planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Diwa Marsh? Yes, as a यप matter अब of fact, हमें there क्या is. करना है. Today we'll be gathering गेज wild लिलीज glaze इकट्ठा करना है. lilies. ओके Glaze lilies. But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Eugene Terrace have some? Even Qingxi हाँ वो तो Village गेज has लिली तो glaze बहुत lilies. इजी है. मैं तो ऐसे ही उठा रहा था भाई. वहाँ पर लियो में ही तो है वो. remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No, those lilies have all been Okay. gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful ह्यूमन सॉन्ग. flower ओके ठीक है. that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. अच्छा ठीक है. पहले Of यहाँ पर course, मतलब बहुत सारे there are गेज लिली some हुआ kinds करते of थे flowers बट अब that have been वो नहीं है. preserved and ठीक है. gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. ओके गेज glaze लिली अभी भी lilies वाइल्ड have में the हमें मिल जाएंगे. तो अभी strongest शायद से जोंगली चाहता है If कि we हम want to वाइल्ड से follow ढूंढ the के true लेके आए. tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. No, I need you to sing to them. Singing to the अच्छा flowers ठीक है. will मतलब make हमें them गाना more गाना fragrant. पड़ेगा. ओ भाई So how good is your singing? आई कैन होल्ड अ ट्यून. ओके Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once. अरे भाई सीन कट कर दिया. नो प्रॉब्लम. वो शायद बोलना चाह रहा था कि हम लोग को तब पता चलेगा जब तुम गाओगे. ओके चलो चलते हैं वहां पर. ओके ये रहा गेज लिली. It's time to sing whenever you're ready. Da, Okay. Da 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 What? da. ओके थोड़ा ठीक ही गाया मैंने. अरे भाई गाना गाने से ये लोग कहाँ से आ गए. They look really angry. Is it because you भाई sang मेरा the सॉन्ग song इतना so खराब तो नहीं हो fast सकता that कि they don't understand दुश्मन आ what जाए you're भाई saying? लड़ने के लिए. और एक तो ये जियो कैरेक्टर निकाल के रखे हैं हम. वाह हम जंप भी गए. वेरी भाई और ये लोगों का शील्ड है यार. ये लोगों को मारना मुश्किल होगा. ओके अरे भाई कुछ ज़्यादा भयानक. एक मिनट यान पे आइस है ना तो मेरे को फायर का यूज़ करना होगा. वैसे में मेरे लोग कुछ ज़्यादा दिक्कत देगा मेरे को. आइस शील्ड के अरे लो शील्ड के वजह से बच रहा हूँ बोलने जा रहा था एंड शील्ड भी टूट गया. एक गया बाकी दो बचे. यान फिर तगड़ा डैमेज देती है यार. कुछ भी बोलो भाई. फाइनली खत्म हुआ भाई. दिमाग खराब हो गया भाई मारते हुए वो लोगों को. Those
Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. वही तो बहुत This डेंजर little लड़ाई किया भाई monster वो is लोग. known as a whopper flower. वूपर फ्लावर. Strange. These petals चलो look कम से कम interesting. सही है. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. चलो ठीक है, हमें Let's जो collect चाहिए what था we वो हमें can मिल of these चुका है. petals. नाइस. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. हाँ. That's so lame. Excuse me. अरे Are गान्यू. you searching for glaze lilies? Oh, hey, it's... What's your हेलो name? गान्यू. Paimon can't remember. Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. यस मुझे एकदम याद है आपका Recognize नाम. me. How was your visit to the Jade Chamber? अरे बहुत बढ़िया हुआ. It sure would have been better if you told us how to... Come to grips with ओके reality. तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सीन कट किया क्योंकि कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, बट यहाँ पर जैसा कि ये गान्यू बता रही थी कि वो बहुत सैड है एंड उसने कुछ गॉड्स के बारे में भी बताया. एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि गान्यू जो है वो भी एक एडेप्टस है एंड इसने गॉड्स के साथ मिलके वॉर लड़ा था जो कि बहुत पहले हुआ था एंड उसके बाद ये भी लियो के लिए काम करने आ गई है. सो आप देख सकते हो यहाँ पर एंड अभी जो है हमें ही गान्यू ही देने वाली है जो भी हमें चाहिए फ्लावर्स. सो वो गान्यू हमें दे देगी एंड वी विल गेट द ग्लेज लिलीज Did फ्रॉम you हर. say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. ओके डन. यहाँ पर हमें मिल चुका है ग्लेज लिली और गान्यू ने यहाँ पर गाना भी गा दिया उसके लिए एंड उसको मिल चुका है. सो वी आर डन विद द स्टफ जो हमें चाहिए था. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. ओके सो वी आर इन द लियो हार्बर बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है. The gate is swarming with मिलेलिथ से पूरा घिरा हुआ है भाई, हर जगह मिलेलिथ से. बात करते हैं. Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I Yep, presume. he's The Zongli. They're watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. ओके Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millelith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let ओके तो यहाँ पर एडेप्टिस और इनके बीच फाइट हो सकता है. सो चीसिंग जो है मैमला को सॉर्ट आउट करना चाहती है बट लेट्स सी क्या होता है. As an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli. ओके We've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng. ओके सो Funeral यहाँ पर Parlor. कुछ ठीक नहीं लग रहा है. कुछ I hope ज़्यादा that यहाँ पर Mr. बात Hu आगे will बढ़े जा रहा keep है. things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, द it फ्यूज may फर्स्ट. be ओके wisest to look for the fuse first.
connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. तो quite the What best. does Zhongli mean by चाइल्ड के बारे में बात कर रहा भाई, ये चाइल्ड है सबके पीछे कंफर्म। Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's चाइल्ड का definitely कुछ him. करना पड़ेगा भाई। He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? फॉलो मी। अच्छा ट्रैवलर को पता है, मतलब मुझे पता है कहाँ पर है। चलो फाइमन फॉलो मी, लेट्स गो। ओके लेट्स गो। अरे भाई मैं आ चुका हूँ और ये है गोल्डन हाउस। तो यहाँ पर है अंदर चाइल्ड, एंड जहाँ तक मुझे पता है यहाँ हमारा होने वाला चाइल्ड के साथ तगड़ा फाइट। सो मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं पहले रेडियंट शोगन निकालूंगा एंड देन मैं अंदर जाने वाला हूँ। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।